Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and other is the Indian Express. So the most important news and editorial of the day that is relevant for your examination will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 8th of March. The first topic is Labour Ministry launches Donate a Pension Scheme. Second news, that is India to advance CEPA with Bangladesh. Third, center to launch the back to school campaign. We'll see the detail of this, how this is going to boost the enrollment in the school, basically from the age group of 14 to 18. The second last news is Russia offer humanitarian corridors. And the last is an editorial, Reaping the Potential of Female Workforce. A very important editorial that gives you an insight about the female labor participations. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based question. These questions would be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. If you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about our newly launched app, this is 2.0, which will give you a lot more other facilities. For more details, you can refer to the description section of this video, where I provided a dedicated link to download this app. Now, before I start the news analysis, I wanted to share a small information with you with regards to the UPSC examinations and the intervention made by the Supreme Court, right? So Supreme Court has asked the UPSC that during the COVID-19, बहुत ऐसे बच्चे थे जो मेंस एग्जाम नहीं दे पाए थे, वो बच्चों को कोविड हुई थी, they were diagnosed with the COVID. So now the Supreme Court has taken the cognizance and they have asked the Union Public Service Commissions कि वो अपनी stand clear करे कि क्या वो उनको एक और attempt देंगे मेंस को लेकर के. So those of you, if you have appeared or you know someone who is already appearing, you can share this news with them, right? That this is not that important news that should be considered as a part of news analysis, but एक important information है, being a civil services aspirant, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. Now moving to the news analysis of the day. Labour Ministry launches Donate a Pension Scheme, right? So this is something important for General Studies Paper 2 in mains, that is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, design and implementations. तो लेबर मिनिस्ट्री ने डोनेट अ पेंशन स्कीम के थ्रू क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, विल अंडरस्टैंड दैट. So the Ministry of Labour and Employment has recently launched Donate a Pension program. एक ऐसी प्रोग्राम है जो कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो ऑलरेडी स्कीम चल रही है, एग्जिस्टिंग स्कीम, उसकी पार्ट होगी, जहाँ पे एनी इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू द पेंशन फंड ऑफ द सपोर्ट स्टाफ. It can be the house help, it can be any, basically supporting staff in any offices or in house. So any individual would be able to contribute their PF. This is what the government has come up with. Something again very important in terms of social security. And this is again relevant for your prelims examination as well. So the scheme will allow any citizen, I just remind this, make sure you do not get confused, any citizen to pay premium amount on behalf of the unorganized worker अंडर द प्रधानमंत्री योगी मान-धन स्कीम. जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी नहीं, क्योंकि उसके एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करेंगे. इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एनी इंडिविजुअल हु विश ही कैन मेक अ पेमेंट. नाउ पेंशन स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की अगर बात करें, सो द पेंशन स्कीम व्हिच वाज एक्चुअली लॉन्च्ड इन 2019 allowed the unorganized sector worker between the age group of 18 to 40 who earn up to 15,000 rupees a month can enroll for a premium which is ranging between 55 to 200 rupees. इतने अमाउंट के किसी के बीच में वो प्रीमियम चूज कर सकते हैं अपने डिजायर्ड एज तक. एंड गवर्नमेंट बेसिकली जो रिटायरिंग एज होगी इस प्रोग्राम पॉलिसी के लिए वो 60 ईयर्स होगी, राइट. उसके बाद हर एक बेनिफिशियरीज को जो इसमें इनरोल होंगे उनके 3,000 रुपीज मंथली पेंशन दी जाएंगे. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज कम अप स्पेसिफिकally for the unorganized sectors. Now, according to the Labour Ministry portal, till date the scheme has a registration of around 46.34 lakh people have enrolled for this particular program, right? Now scheme के क्या benefits होंगे जो अभी donate a premium scheme launch की गई है, donate a pension की जो बात की जा रही है. So this will allow citizen to donate a premium contribution from their immediate support staff, चाहे वो domestic workers हों, drivers, helpers, caregiver, nurse या फिर household establishment में कोई भी individual हो, you can contribute to their part
as a donate a pension scheme. Now, donor can make a contribution for a minimum of 1 year, और उसकी जो अमाउंट रेंज करेगी दैट वेर क्लोज टू समवेयर 660 to 2400 rupees a year डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द बेनिफिशरीज. बिकॉज उसको 3000 रुपीज़ की गवर्नमेंट पे आउट भी अगर करती है तो एक अमाउंट सब्सटैंशियली होना चाहिए कि कितनी उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगी. Now the premium can be through Maan-Dhan, that is visiting common services center में भी जाके कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की जो एक पोर्टल है Maan-Dhan.in, वहाँ पे भी जाके किसी भी इंडिविजुअल के ये पास पावर होगी, ये फैसिलिटी होगी कि वो कंट्रीब्यूट कर सके. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, if you're writing in case studies also, or if you're giving some example with regards to the social empowerment for the underprivileged, you can use this type of examples. Now, so this is a basic infograph to give a glimpse how does it function. और ये एक टोल फ्री नंबर है फॉर दोज हु लुक फॉरवर्ड टू इनरोल फॉर दिस, या फिर आप किसी की अगर हेल्प करना चाहते हैं, आप किसी को इस पूरे स्कीम के बारे में बताना चाहते हैं, प्लीज शेयर दिस नंबर विद देम सो दैट दे कैन हैव फर्दर इन्फॉर्मेशन वेयर वन स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी कैन बी कंसिडर्ड एंड सिक्योर द फ्यूचर फॉर दोज हु मेक्स योर लाइफ ईजी. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट and a motto behind this particular scheme or aim of this particular idea that government has come up with. The second news of the day, India to advance CAPA, that is CAPA, with Bangladesh. This particular news is important for General Studies paper 2 in mains, that is India and its neighborhood relation. This is also important in the same paper with the bilateral relationship and engagement. और GS के जो paper 3 है वहाँ पे भी important है Indian economy में लेकर के, right? So this is important in 2 or 3 topics of the General Studies. Now the center has said कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि comprehensive economic partnership agreement जो है CAPA, that should be enhanced with the Bangladesh, right? And they have called for a greater cooperation between two countries, जहाँ पे स्पेसिफिकली जो डिफेंस और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स होंगे उनके प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने की बात की गई है. एंड दे शुड इंक्रीज टू सच एक्सटेंट दैट दीज टू कंट्री कैन बी लीडर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एज वेल एज इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स. नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें, जो ट्रेड हुई थी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, दैट वाज अबाउट 3.3% ऑफ एक्सपोर्ट एंड 9.7 बिलियन के आसपास वैल्यू रही है. 0.3% ऑफ द इंपोर्ट विच वैल्यूड अराउंड $1.3 billion. नाउ स्टिमुलस टू डिफेंस प्रोडक्शंस की बात की गई है इंडिया की तरफ से. इंडिया ने कहा है दैट इट्स नीडेड टू गिव मोर इम्पेटस इन जॉइंट प्रोडक्शंस ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स, बिकॉज जो कॉपरेशन हुई है पहले भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखी गई है. इंडिया हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड $500 million line of credit to Bangladesh. So substantially India is looking for some conclusive output which is helping both countries down the line, right? And in 2019, India has announced 500 million line of credit to Bangladesh for the defense related procurement. Now boosting pharma capabilities की बात की गई है, कैसे ये दोनों countries मिलके फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को इन्हांस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. सो बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश कैन हैव अ जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन वैक्सीन एंड मेडिसिन, and these two countries have a potential to become the pharmacy of the world. This is what the government of India has noted. It also said that to build an uninterrupted resilient supply chain, ये ज़रूरी है that we should explore the potential investment like textile के अलावे jute, productions, leather, footwear and other focus area, something that India and Bangladesh should be looking upon. Now just to remind you, बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मर्चेंडाइज की अगर बात करें, जो क्लोथ्स आइटम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल की वहाँ जो बूम हुई है वो उसकी इकोनॉमी में बहुत हद तक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया है, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बांग्लादेश. इवन द इंटरनेशनल ब्रांड लाइक ज़ारा, एडिडास एंड मेनी अदर ब्रांड लाइक नाइकी, जितने भी इंटरनेशनल फॉरेन ब्रांड हैं, मार्क्स स्पेंसर्स, उनकी प्लांट वहाँ पे इस्टेब्लिश उन्होंने की है. दिस इज हेल्पिंग टू बूस्ट द लोकल इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश एज वेल. नाउ the Minister of Commerce, Mr. Piyush Goyal, has said that 8.8 billion almost has extended to Bangladesh through the line of credit, the largest concessional credit given to any single country by India. This is something, an important point to note. If you want to highlight this in mains papers, if you're writing in relationship between India and Bangladesh, तो आप ये point बिल्कुल highlight कर सकते हैं कि एक ऐसी पहली country है जिसको इंडिया ने इतनी अधिक line of credit दी हुई. Now FTAs की बात करें और किसी दूसरी कंट्रीज के साथ इंडिया के क्या रिलेशन इन टर्म्स ऑफ द FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में. सो इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन विद द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पे UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा
Israel has recently concluded as a part of FTA, and even for the UAE also, India is looking forward for all the comprehensive and free trade agreement. Now, the other news center to launch back to school campaign, something very important in terms of boosting and getting back to the student on the par excellence with the studies. And during this COVID-19, many of the girls' child have left this school. तो जो dropouts थे उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से. This particular news is important for General Studies paper 2, issues related to development and management of health and educations. Now, Center is launching a back to school campaign जहाँ पे ये कोशिश की जाएगी जो 4 लाख यंग गर्ल्स हैं जो ड्रॉप आउट हुई हैं उनको वापस से फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बनाया जाए. सो दे आर कमिंग विद द फ्रेमवर्क दैट हाउ द एग्जीक्यूशन पार्ट हैड टू वर्क सो दैट एवरी चाइल्ड गर्ल चाइल्ड शुड बी द पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम्स, राइट. तो नई जो स्कीम लाई गई है न्यू साक्षर आंगनवाड़ी स्कीम, सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम है जहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वर्क कर रही है कि अब जो फोकस है वो 14 to 18 ईयर्स के बच्चों पे होनी चाहिए, ना कि 11 से 14 ईयर्स के बच्चों पे, बिकॉज द सर्वे हैज फाइंड कि इस एज ग्रुप की जो बच्चे उन्होंने सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट किया. सो द कैंपेन एम्स टू ब्रिंग स्कूल बैक दो स्टूडेंट हु हैव लेफ्ट द स्कूल, और आंगनवाड़ी वर्कर्स इसमें कोलैबोरेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ. हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीईओ होते हैं, डीईओ दिस इज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर. They would be coordinating in part with the Anganwadi workers and ensure that there is a mass, basically जो roll back की जाएगी students की, girl student की, वो ज़्यादा से ज़्यादा. Now there is a survey by the UNICEF. They have said that almost 50,000 Indian adolescents girls जो हैं during COVID-19, उसमें report की गई that while 90% of the respondents were currently enrolled in school, but बहुत ऐसी गर्ल थी जिन्होंने वापस से स्कूल छोड़ दिया, और स्कूल छोड़ने के बाद या तो वो डोमेस्टिक वर्क करने लगे या either they have got married, right? So this is what the India UNICEF representative has to say. And he also said that these girls were returning to school. नहीं तो कोविड खास करके इनके जो पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस करना भी काफ़ी टफ हो रहा है. सो दैट बेसिकली इफ once a girl start earning or या उनकी शादी, they don't want to revert back to the school, right? So that is a problem. Awareness program गवर्नमेंट कर रही है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को एनरोल की गई है, एंड with the help of the district education officers. now गवर्नमेंट ने कहा है कि जितनी भी एडोलेसेंस गर्ल हैं उनको स्कूल की जो उनकी ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ी है उसे हमें मेकअप करने की ज़रूरत है, एंड स्किलिंग सपोर्ट इज समथिंग दैट इज ऑल्सो एसेंशियली रिक्वायर्ड विद द न्यूट्रिशनल सपोर्ट. द न्यूट्रिशनल और स्किलिंग सपोर्ट हमें इन बच्चों को देनी है. For 2018 and 19, there were almost 11.88 lakh girls with the age group of 11 to 14 were the part of the scheme for adolescents girl. अब जो नई स्कीम है उसमें 14 to 18 ईयर के एज ग्रुप पे खासा ध्यान गया है, जहाँ पे इम्पेरेटिव ये है कि 4 लाख जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनको वापस से स्कूल में एब्जॉर्व कर लिया जाए, and they should be the part of the formal education which can continue and help them to get a good livelihood. Now मैपिंग ड्रॉपआउट्स की बात की गई है. आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होंगे दे विल मैप द नंबर्स ऑफ द चिल्ड्रन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, वो शेयर करेंगे अपने डेटा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ. Now the local officer would find that girls that who were actually the part of their school should be again the part of either a vocational training program या किसी स्किल सेंटर में हो, या फिर ओपन स्कूलिंग भी अगर करना चाहें वो भी कर पाएंगे, राइट. सो द गवर्नमेंट जस्ट वांटेड कि उनको एक एजुकेशन के साथ जोड़ के रखा जा सके. दे शुड बी गिवन द फॉर्मल एजुकेशन, राइट. So the data from the Education Ministry, from the Pradhan portal and जो Ministry of Child Development है उनके दोनों तरफ से कॉम्बिनेशन ये मॉनिटर की जाएगी that how the best result can be given, right? And आंगनवाड़ी वर्कर्स इन एडिशनल वर्क्स के लिए उनको एडिशनली पे भी करेगी गवर्नमेंट, like 500 to 1000 रुपीज़ फॉर काउंसलिंग. और जो ड्रॉप आउट्स हैं जितने बच्चे उनको वापस से इनरोल करने की कोशिश की जाएगी विद द हेल्प ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स प्लस द DEO, that is the district education officers. Now the other news, Russia offer humanitarian corridors. Again something very important at this point after 11 to 12 days of war that has arises the tension that is between Russia and Ukraine. तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ रिलीफ दी गई है रशिया की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, वहाँ जितने लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको ले आने की बात की है, राइट. So this is something important for General Studies paper 2, effect and policies for developed and developing countries. Okay, क्या क्या consequences होंगे वो भी समझेंगे. So Russia recently has proposed establishment for humanitarian corridor where they have allowed citizens to leave 5 Ukrainian cities including the capital Kyiv, right? जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव,
वहाँ से भी इवैक्यूएट करने की बात की गई है। बट जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट किया इस प्रपोजल को और कहा है कि ये हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने का एक तरीका है। इवन दे वांट रशिया और बेलारूस ये मिल करके इस तरह की चीज़ों की करने की कोशिश करें, ऐसा कहना है यूक्रेन के प्रेसिडेंट का। यूक्रेन की रिस्पॉन्स मैंने आपको बताई, बट टू गेट मोर डिटेल अबाउट दिस, यूक्रेन dismissed the Moscow offers, that is the Russia's offer for the humanitarian corridors, and they said यहाँ पे अगर इस तरह की चीजें होती है तो एक रिफ्यूजी क्राइसिस अराइज होगी एंड वी डू नॉट नो वेयर द पीपल इज गोइंग टू लिव, राइट? सो फॉर अ लीडर दिस इज समथिंग विच इज नॉट ग्रेट अ डिसीजन, डेफिनेटली दे आर बैकिंग दैट। इस तरह के ये जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं रशिया की इंटेंशन नेगेटिव है, गलत है। Now, the Russia invasion has put more than 1.5 billion people to Ukraine borders, and even the UN called for the Europe's fastest refugee growing crisis. Second World War के बाद ये सबसे बड़ी refugee crisis है जो वर्ल्ड ने देखी होगी, and this is going to be history down the line 10 years. अगर आप देखेंगे, you can find a chapter in this particular crisis that is ongoing at present. Now, इंटरनेशनल प्रेशर्स भी है रशिया की तरफ, रशिया को दी गई इंटरनेशनल प्रेशर। तो कुछ जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं रशिया के, उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के तौर पे वो सिटीज़ में बम्बार्डिंग नहीं करेंगे ताकि वहाँ से लोग निकल पाएँ। एंड रशिया हैज़ प्रपोज्ड द सेफ पैसेज फ्रॉम इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाइक खार्किव, कीव, मरिपोल एंड सुमी। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग की गई और बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स भी जो वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो वहाँ पे स्ट्रैंडेड है, राइट? एंड द efforts were made by the French president, right? जो कि रशियन प्रेसिडेंट को जिससे बात हुई है, they have said that we need to work on a humanitarian corridor and the people need to be evacuated at the earliest. Now, looking into the part of countries where the Ukraine has fled, ये कुछ important maps है, basically data है जो आपके लिए help करेगी. So most of the people have left to Poland. जो लोग यूक्रेन से कहाँ गए हैं पोलैंड की तरफ बढ़े. Rest of the people have moved to Europe, then some to Hungary, then some to Czechoslovakia, Moldova, Romania, Russia, and Belarus. So this is how people are moving. So top 3 countries: Poland, rest of Europe, and Hungary. Now, how far Russian troop has advanced? This is a map that will give you a clear picture that how the Russian forces has invaded Ukraine. So mostly eastward expansion हुई है because जो रशिया के पार्ट में जितनी बॉर्डर्स लगती है उनको कैप्चर फर्स्ट किया गया। तो जो यूक्रेन की ये सारी पार्ट ईस्टर्न रीजन पे आती है। यू कैन सी दिस मैप, दिस रेड एंड कलर इज अ मिलिट्री कंट्रोल रीजन एंड दिस कलर्स, द कलर इज रशियन एडवांसिंग, दे आर वहाँ पे वो अब ग्रो कर रहे हैं और अपनी जो फोर्सेज है वहाँ पे इन्वेड कर रहे हैं और मिलिट्री की प्रेजेंस वहाँ ज़्यादा बढ़ रही है, राइट? सो यू कैन सी ऑलमोस्ट दिस पार्ट ऑफ द बेलारूस रीजन हैज़ बिन लेफ्ट और सबसे ज़्यादा रशिया ने अपने जो यूक्रेन की ईस्टवर्ड साइड है उस पर इन्वेजन करने की कोशिश की। Now, reaping the potential of female workforce. This is something important for General Studies paper 2. Government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, design and implementations. So what I'm going to discuss under this editorial, there would be 5 important subheads. The first is female labor force participation, sector-wise potential, gig economy के बारे में बात करेंगे, how this is impacting, and even policies that measure the requirement and way forward. So this is how we'll be moving ahead with this editorial. और एडिटोरियल की ये भी थीम है कि प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, खास करके विमेन के लेकर के, वी आर मोर फोकस अपॉन द जेंडर इश्यूज इन दिस पार्ट, राइट? सो इंडिया पॉपुलेशन की अगर बात करें, द इंडिया पॉपुलेशन इज अमंग द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इवन इन 2020 द मीडियन एज की अगर बात करें इंडिया के, दिस इज 29 ईयर्स, राइट? But women and girls form a significant part of this demographic dividend that India is occupying at this point of time. बट ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि ये इनेबिलिटी है अभी तक जहाँ पे विमेन की एम्प्लॉयमेंट जो है लेबर मार्केट में और इकोनॉमी में काफ़ी कम है, उनकी जो पार्टिसिपेशंस हैं जो होनी चाहिए, विच इज़ वेरी लेस कंपेरेटिवली टू मैन. नाउ कंट्रीज लाइक चाइना, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, they have example for the demographic dividend and they can be replaced, achieved with a fast pacer of economic growth. So what India need to do? India need to harness the gender part of the employment part. We need to incorporate the sense where the women can be the main force in the economy as well. Female labor force participation की बात की गई है. This is also known as FLFP. So the women in the workforce in India has dropped to 32% of the working, जहाँ पे earlier ये पहले 2019 में 21% हुआ करती थी, right? So you can see this number. And even the female labor force participation rate is lowest among the BRICS nations. जो हमारे BRICS countries हैं
उनमें इंडिया की पार्टिसिपेशन फीमेल में सबसे कम है। इवन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं श्रीलंका और बांग्लादेश, उनकी रिस्पॉन्स हमारे मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे फीमेल की पार्टिसिपेशन इंडिया से ज़्यादा अच्छा है। Now, in the female labor force participation, India is at a crucial juncture and it should achieve the growth, but also it should promote for the inclusive growth to achieve the sustainable development goal where it called for equality for all, right? तो जो SDG के जितने भी goals हैं वो आपके लिए काफ़ी relevant और important है। Now, sector with potential, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें पोटेंशियल्स हैं, डेफिनेटली वुमेन कैन बी द पार्ट ऑफ इट। तो यूनाइटेड नेशन की जो वुमेन एस्टिमेट्स डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है दैट वुमेन कैन बी द पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, राइट। और मोर देन 80% नर्सेज और मिडवाइफ्स जो हैं वो इस सेक्टर में काम भी कर रही हैं। Now, women can be a significant portion of the workforce, especially in the education sector, जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के चाइल्डहुड केयर तक के सेक्टर्स में women can make a substantial contributions, right? Now the care services again something very important. ये एक ऐसी सर्विसेज है जो हेल्थ, एजुकेशन और भी पर्सनल केयर सर्विसेज को भी इंक्लूड करती है। So these three services is potentially important to ensure that women participation यहाँ पे increase की जाए। गवर्नमेंट को यहाँ पे efforts करने की जरूरत है। Now the global evidence have documented that International Labour Organization suggested that it will lead to more employment opportunities for women. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी तरफ से कॉग्निजेंस लिया है, दे वुड बी डूइंग मोर वर्क। बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया स्पेसिफिकली, जब हमारी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में भी परफॉर्मेंस खराब है, सो दिस इज समथिंग दैट डोमेस्टिक स्कीम हैज टू कम, और गवर्नमेंट को अपने लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे एक हायरार्किकल लेवल पे इंटरवीन करनी पड़ेगी, वेयर वी हैव टू वर्क फ्रॉम द स्क्रैच टिल द टॉप। Now, gig economy, something very important, contributing a lot to economy, but again, ये एक ऐसे सेक्टर है जो रिकॉग्नाइज नहीं की जा रही है अभी तक। So the gig economy compromises a platform जहाँ पे इनोवेशन सॉल्यूशंस भी दी जा रही हैं, चाहे वो रेल हो, ट्रांसपोर्ट हो, रिटेल हो, पर्सनल हो एंड होम केयर हो, राइट। सो 4 important sector like transport, retail, personal and home care. So India has emerged as one of the largest country in the gig and platform work. Gig workers वैसे वर्कर होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बट दे आर नॉट इन द पेरोल, राइट। वो एक्चुअली एम्प्लॉय नहीं है, उनको कभी भी हटाया जा सकता है, एंड इवन दे आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी बट नॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉय, राइट। So digital platform in India has thrived, increasing the user smartphone, low internet connections देखी गई है women's में, and even डिजिटल इंडिया की जो कैंपेन है वो भी बहुत हद तक सक्सेसफुल अपने पेनिट्रेशन में दे रही है, बिकॉज जिस तरह से रीचेबिलिटी होनी चाहिए रूरल इंडिया में, दैट इज स्टिल मिसिंग। नाउ प्लेटफॉर्म जॉब की अगर बात करें, दे हैव लो एंट्री बैरियर, कैटर द नीड फॉर एस्पिरेशंस ऑफ द वर्कर्स, वेरिंग डिग्री ऑफ सेट्स यहाँ पे भी है। नाउ इवन बाय द ILO सर्वे, जो ग्लोबल सर्वे की गई, दे हैव नोटेड दैट वर्क फ्रॉम होम और जॉब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर द वुमेन्स, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, सो दैट इफ द गिग इकोनॉमी इज प्रमोटेड, सेक्टर कुछ इन्हांस की जाती हैं, देन वुमेन की पार्टिसिपेशन भी बढ़ेंगी इसमें। नाउ पॉलिसीज एंड मेजर्स दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर वुमेन, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि वुमेन और उनकी फैमिलीज को मोटिवेट किया जाए, सो दैट दे कुड गेट एजुकेशन डन, स्कॉलरशिप्स के थ्रू या फिर और भी अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ दे के भी उनको प्रमोट किया जा सकता है। गवर्नमेंट के स्किल ट्रेनिंग पार्टनरशिप हो सकती है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, सोशल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सो दैट दे कैन क्रिएट ambience where women can have their upskilling, right? And policy support essentially required from the government, जहाँ पे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी दी जाए, जहाँ पे स्ट्रेंथन करे अपने एग्रीगेट डिमांड को, एंड इवन जो उनके लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल एक्सपिरेशंस हैं या फिर जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की एक्सपिरेशंस हैं, वो जेंडर इक्वालिटी और सोसाइटल वेलबींग के साथ प्रमोट हो। एसेंशियली वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू राइटिंग इन मेंस पेपर, आप ये सारे पॉइंट्स को जरूर इंक्लूड करेंगे। Now, way forward, what should be the way forward in this context? तो enabling women to acquire physical assets, चाहे वो credit facilities हो, revolving funds हो, employment skills हो, ये सारी चीज़ें देने की ज़रूरत है, और उनकी जो employment opportunities है वो बढ़ाने की ज़रूरत है across the diverse sector, right? And skill training for the women is aligned in gig, platform, care sector, और जो 3 सेक्टर काफ़ी इसमें रेलिवेंट होंगे। पहला तो गिग है, दूसरी प्लेटफॉर्म, एंड इवन द केयर सेक्टर which can have the other emerging sector covered with the PLI scheme. जो गवर्नमेंट ने अभी PLI schemes निकाली हैं, 11 important to 15 important sectors are there, उनमें भी women participations को increase करने की जरूरत है। Now there's a need for a training program which is well defined. Women की जो digital access है उसे बढ़ाने की जरूरत है, उनकी reachability को बढ़ाने की जरूरत है, and mentor them to take up unemployment, जो employment opportunities है emerging sectors में, उनके बारे में awareness भी नहीं है लोगों को। So we need to work on the part where the mentorship can be given
and the women should actually know कि उनकी opportunities किन किन sectors में है, उनकी demand किन किन sectors में है, so that they can be the part of the formal economy. So this is how the way forward can be written in a mains paper. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is B. For second question, the correct option is D. आज के कुछ important questions practice के लिए. Which of the following has recently released the COVID-19 Performance Index? Harvard University, Shram Institute of India, Lowy Institute, or World Health Organizations? आपको correct options बताने हैं इसमें. If you know, it's well and good. If not, you can check it out. Second question of the day. The fourth edition of Future Investment Initiative Forum was hosted in which one of the following cities? Sweden, Laos, Riyadh, or New Delhi. This is again important, mostly relevant for many other competitive examinations also, right? So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.